Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Circles. So let's solve question number 16. In the given figure, AB is the diameter of a circle with center O. If chord AC is equal to chord AD, prove that first part and arc BC is equal to arc DB. Second, AB is the bisector of angle CAD. Further, if the length of arc AC is twice the length of arc BC, find A angle BAC, B angle ABC. So we are given the figure over here. AB diameter है, O center है, chord AC and AD equal है. AC and AD equal है. So this is the given information. First we need to show that arc BC and arc DB दोनों equal है. Arc BC this arc and arc DB this arc, दोनों arc को equal prove करना है. Okay. For that, let us join B and C and D and B. Okay. We'll draw the chords BC and DB. Let's see why. Now we also need to show AB is the bisector of angle CAD. AB is bisecting angle CAD, ये बताना है. CAD, AB is bisecting it, that is dividing into equal parts. ये बताना है, ये prove करना है. So to show that these two angles are equal, that is angle CAB and DAB are equal, we are going to prove that these triangles are equal. Okay, triangle ACB and triangle ADB are congruent. Okay, so let's see how. ACB and ADB को congruent prove करेंगे. For that, we have AB common side equal है, right? So AB दोनों में ही present है, common side है. What else? Angle ACB will be 90 degree. Angle subtended by the diameter on the circumference of the circle is always right angle, right? So angle ACB will be 90 degree. This is the diameter. Diameter will subtend a right angle. Same way, diameter is subtending ADB on the circumference, so this will also be right angle. So I have angle ACB and angle ADB equal, both right angles. Okay, so मेरे पास right angle है. Right angle का opposite side AB, यहाँ पे भी right angle का opposite side AB, that is hypotenuse equal. I need one more side. Okay, corresponding sides equal. I have chord AC and chord AD equal. It is given, right? Chord AC and chord AD are equal. So right angle, hypotenuse and side. By RHS test of congruency, I can say the two triangles are congruent. Once the triangles are congruent, corresponding paths will also be congruent. So corresponding paths में angle CAB and angle DAB will be equal, congruent होंगे, right? So these two angles are equal, that is CAB and DAB are equal. CAB and DAB equal है, it means AB is bisecting angle CAD. AB is the bisector of angle CAD, तो ये मुझे easily मिल जाएगा once I show that these two angles are equal. Okay, second part easily मिल जाएगा. First part we need to show arc BC and arc DB are equal. Arcs को equal show करना है. Okay, so for that I can say side BC and side DB are equal. Okay, again corresponding paths हो गया, right? So chord BC and chord DB are equal, CPCT. Okay, so I have angle CAB equal to angle DAB. ये CPCT है. Also chord BC is equal to chord DB.
तो कॉर्ड इक्वल है, देन ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, दिस कॉर्ड DB इज सबटेंडिंग एंगल DOB एट द सेंटर. Same way, this chord BC is subtending angle BOC at the center. Equal chords subtend equal angles at the center. Right? Property है. So chords equal है, then angles subtended by them at the center are also equal. So if BC, chord BC is equal to chord DB, then angle subtended by BC at the center is equal to angle subtended by DB at the center. That is angle BOC and angle DOB दोनों equal है. Angles अगर equal है, then ये angles जो arc से subtend हो रहा है, okay, that is this angle BOC is subtended by this arc BC. Same way DOB is subtended by this arc DB. Then their respective arcs are also equal. Okay, so arc BC is equal to arc BD or DB. Okay, one and the same. I hope this part is clear. So we'll show that the two triangles are congruent by RHS test of congruency. Once the triangles are congruent, then CPCT से angles equal होगा, angle CAB and DAB, okay, that will show that AB is the bisector of angle CAD. It is dividing in two equal parts. Also BC and DB chords equal होगा, CPCT again, ये दोनों ही CPCT है. Chords equal है, then equal chords subtend equal angles at the center. So BC जो angle subtend करेगा at the center, that is angle BOC, and DB जो angle subtend करेगा at the center, that is angle DOB, will be equal. And if angle subtended at the center by the arcs are equal, then the arcs are also going to be equal. Okay, and vice versa. ठीक है. So अगर तुमको बोला है arcs का रेशियो कुछ दिया है, ठीक है, रेशियो दिया है या इक्वल दिया है, देन एंगल्स का भी सेम रेशियो होगा या इक्वल होगा, एंड वाइस वर्सा. अगर एंगल्स इक्वल दिया है तो आर्क्स भी इक्वल होगा. ठीक है, सो वील इजीली प्रूव द फर्स्ट पार्ट एज वेल. ठीक है, ये भी मिल जाएगा. फॉर लास्ट पार्ट अगेन दो एंगल्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पे प्रूव करना था, यहाँ पे फाइंड करना है. सो वील फाइंड दैट लेटर. Let us solve now with proper steps. Let us prove these two first. First, draw the figure, then write down the given information. O is the center of the circle. AB is the diameter. Also, we are given chord AC is equal to chord AD. We are given some more information. Further, if the length of arc AC is twice the length of arc BC, length of arc AC is equal to twice, that is 2 times the length of arc BC. So twice arc BC. So this is all the information. To prove, we need to prove two things. First, arc BC is equal to arc DB. You'll write it down. I'm not writing. Second part, again I'm not writing. AB is the bisector of angle CAD. दोनों लिखो. To find, you need to find out two angles. Angle BAC, angle ABC. So दोनों ही लिखो. ठीक है. Construction, we have joined OC and OD. So construction, join OC and OD. Starting with the solution, I'm not writing proof because we not only have to prove two things, we also have to find two things. So solution ही लिखो instead of proof. ठीक है. Starting with the first part,
फर्स्ट वी नीड टू शो दैट द टू आर्क्स आर इक्वल, BC एंड DB, ये दो आर्क्स को इक्वल प्रूव करना है, फॉर विच कॉर्ड्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड्स कैसे इक्वल होगा? बाय शोइंग दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन डू वी हैव? वी हैव AB कॉमन साइड इक्वल, हाइपोटेनस है हमारे पास। ठीक है, साइड भी है। We need to show that these two are right angles. So right angles दिखाना पड़ेगा, angle ACB and angle ADB are right angles. So write down AB is the diameter of the circle. This is given. So angle ACB and angle ADB, each of them will be 90 degree. So angle ACB and angle ADB both are 90 degree each. Angle in a semicircle, or you can write down angle subtended by a diameter on the circumference of the circle is a right angle. बहुत लंबा रीजन हो जाता है, इसीलिए ये शॉर्ट में लिखते हैं. Why angle in a semicircle? Because if you consider a circle, the diameter divides the circle into two equal parts. ये एक सेमी सर्कल हो गया, ये एक सेमी सर्कल हो गया. अब डायमीटर के दो एंड से इफ यू जॉइन दो आर्म्स ड्रॉ किया, देन द एंगल फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल. कहीं पर भी सर्कमफरेंस में ड्रॉ करो. सो ये दो एंड से मैंने जब ड्रॉ किया, द एंगल विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल. ओके, सो दैट इज वाई एंगल इन अ सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंड से. ठीक है, मार्क दिस एज 1 बिकॉज दिस विल बी रिक्वायर्ड. राइट एंगल इक्वल है. ओके, नाउ वील कंसिडर द टू ट्राइंगल्स एंड शो दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB, पहले राइट एंगल इक्वल है. सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1. हाइपोटेनस AB एंड हाइपोटेनस AB इक्वल है. 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस है. ठीक है, सो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड. Side AC and AD are equal. Given, right? It is given to us chord AC is equal to chord AD. Okay. अब दोनों triangles congruent है by RHS test of congruency. So triangle ACB is congruent to triangle ADB by RHS test ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, पूरा रीजन लिखना है. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अब CPCT से आई कैन से दैट chord BC and chord DB are equal and angle CAB and angle DAB are also equal. Okay, so BC is equal to DB and angle CAB is equal to angle DAB. BC and DB corresponding parts, that is corresponding sides, will be equal once the triangles are congruent. Okay, so BC and DB equal है. Also angle CAB and DAB equal होगा. ठीक है, again corresponding parts. So दोनों के लिए common reason CPCT, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay, mark this as 2 and this as 3. ओके, नाउ BC एंड DB इक्वल है. BC एंड DB ये दो कॉर्ड्स इक्वल है. दिस इज अ कॉर्ड, राइट? सो ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, दैट इज एंगल BOC, एंड ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, दैट इज एंगल DOB, विल ऑल्सो बी इक्वल बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो ये जो एंगल्स फॉर्म करेगा एट द सेंटर वो भी इक्वल होगा. सो कंसिडर दिस
chord BC is equal to chord BB from 2. So angle BOC is equal to angle DOB. Equal chords subtend equal angles at the center. All right. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है BOC एंड DOB. देन ये एंगल्स जो इक्वल है एट द सेंटर, उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, ओके, this angle BOC is subtended by this arc BC. Same way DOB is subtended by this arc DB. So ये जो arcs है BC and DB, they will be equal. Okay, तो अगर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल है तो वो आर्क्स भी इक्वल होगा, जो आर्क ये एंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है. एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. अगर आर्क्स इक्वल है तो angle subtended by them at the center will also be equal. Vice versa is true as well. ठीक है. So therefore arc BC is equal to arc DB. Arcs subtending equal angles at the center are equal. All right. So we proved this. BC and DB equal है. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट मिल ही गया है आंसर. We have angle CAB, angle DAB equal. CAB and DAB equal. So the two angles are equal. Therefore, I can say AB is bisecting angle CAD. So write down angle CAB is equal to angle DAB from 3. So therefore AB is the bisector of angle CAD. All right. We proved the two things. Now coming to the last part, we need to find out two angles, angle BAC and angle ABC. Let's see how to find. Now let us see how to find the two angles. Further, if the length of arc AC is twice the length of arc BC, arc AC is twice the length of arc BC. We had already written this in given part. आर्क्स का रिलेशन दिया है. आई कैन से therefore arc AC अपॉन आर्क BC, इसको शिफ्ट कर दिया, इट इज इक्वल टू 2, राइट. 2 I can write as 2/1. I'm directly proving, students. So step by step we'll see how to solve. Arc AC is twice arc BC. BC को शिफ्ट किया, arc AC by arc BC is 2 and 2 is nothing but 2/1. I can write it as 2/1. ठीक है. 10 है तो 10 I can write as 10/1. ठीक है. So arcs का रेशियो है मेरे पास. आर्क्स का जो रेशियो है, ओके, इट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दीज आर्क्स एट द सेंटर. ठीक है. सो ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर एंड ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, वो दोनों एंगल्स का रेशियो भी सेम होगा. ठीक है. सो आर्क AC इज सबटेंडिंग विच एंगल एट द सेंटर? आर्क AC, दिस arc AC is subtending AOC at the center. AC से center तक जाओ, so angle AOC. Okay, so arc AC is subtending angle AOC. Arc BC is subtending angle BOC. It will be same. Okay, respective angles का ratio will also be same. So you will write down ratio
of the arcs is equal to the ratio of corresponding angles at the center. ठीक है. So angle AOC by angle BOC is 2/1. Do I know angle AOC, angle BOC? I don't know. And I am interested in finding BAC and ABC. So यहाँ पे BAC and ABC तो है नहीं. ठीक है. So somehow we need to introduce. Now AOC is subtended at the center by this arc. Right? This arc is subtending AOC at the center. Is this arc subtending any other angle which is on the circumference? Because I can relate the angle subtended at the center and angle subtended on the circumference. So this arc is subtending ABC on the circumference. AC ये chord है या arc ही consider करते हैं. ठीक है, chord नहीं consider करते हैं, arc ही consider करते हैं. This arc is subtending AOC. And the same arc is subtending ABC. ABC is on the circumference. AOC is at the center. And I know angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference by a given chord or arc. ठीक है? So AOC is twice ABC. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference ABC. Sorry. So AOC की जगह पे मैं ABC इंट्रोड्यूस करूंगी एंड ABC तो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? सेम वे BOC की जगह पे I'll introduce some other angle that is BAC. BOC is subtended by this arc BC at the center. The same arc is subtending BAC on the circumference. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. CAB बोलो या BAC बोलो, एक ही बात है. So instead of writing CAB which I wrote earlier, I am writing BAC. ठीक है, because यहाँ पे BAC है. So BOC is twice BAC. So in place of AOC I can put twice ABC and in place of BOC I can put twice BAC. Okay, so first I need to write this. इसको mark कर दो as last was 3, so mark this as 4. Now पहले ये लिखते हैं, ठीक है? So angle AOC is twice angle ABC. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. All right, mark this as 5. Same way BOC is twice BAC. I hope you are getting students. बहुत ही easy है, जो भी properties अब तक यूज किया है वही reuse करना है, ठीक है? So ये सर्कल में BC जो आर्क है, कॉर्ड कंसिडर करो या आर्क कंसिडर करो, ठीक है? ये आर्क सेंटर पे BOC सबटेंड कर रहा है एंड यही आर्क सर्कमफेरेंस पे BAC सबटेंड कर रहा है. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है? सो mark this as 6. Again, angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. So putting the values of AOC and BOC in 4. Okay, so from 4, 5 and 6, combining the 3, what will I get? Basically 4 में मैं ये values put कर रही हूँ 5 and 6 का. AOC is twice angle ABC, so I'm putting that value over here, twice angle ABC. Same way BOC is twice angle BAC. 2/1, 2 cancel हो जाएगा. So angle ABC is twice angle BAC, right? Cross multiply करना है बस. So angle ABC is twice angle BAC. Mark this as 7.
Now it's very easy. We just need to find out these two angles, BAC and ABC. Values तो है नहीं हमारे पास, कैसे find out करेंगे? BAC this angle, ABC this angle. Both the angles belong to this triangle. ये जो triangle दिख रहा है ACB. So we'll be considering this triangle. Apply SOMAT property. Sum of all angles of triangles is 180 degree. So sum of all the three is 180. And ABC and BAC का relation तो मुझे पता है, ABC and BAC. ACB is 90 degree. So basically ये दो का sum 90 होगा. ठीक है? So let us solve and find out. So considering triangle ACB. In this triangle, I have angle ACB which is 90 degree. Angle ACB is 90 degree. We had already shown from 1. ठीक है? So write down from 1. This angle is 90 degree. Now sum of all the angles is 180 degree. So write down angle ACB plus angle BAC plus angle ABC is 180 degree. Sum of all angles of triangles is 180 degree. Okay. ACB 90 है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. BAC एज इट इज रखते हैं, ABC की जगह पे BAC पुट करेंगे. ठीक है. सो BAC एज इट इज, ABC is twice BAC. ABC is twice BAC. So BAC plus twice BAC, thrice BAC. बहुत ही इजी है अब स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इजी है. So thrice angle BAC is 90. So angle BAC is 90 by 3 which is 30. BAC 30 है, ABC 60 मिलेगा. ठीक है. So बॉक्स कर दो इसको. Angle ABC is twice angle BAC from 7. So put the value. इसको भी बॉक्स कर दो, ABC को भी. We got the values of the angles. BAC, that is A, is 30 degree and ABC, B part is 60 degree. ठीक है. So end में लिख लो, angle BAC is 30 degree, angle ABC is 60 degree. All right.